Insert three rational numbers between 2 upon 5 and 3 upon 7. Remember, we can insert infinite numbers of rational numbers between any two numbers. यहाँ पे हम लोग को सिर्फ तीन numbers को insert करना है. There are many ways of doing this question. The one which I am going to teach you right now is the most easiest one. So let's start. Write the first number as it is 2 upon 5. और उसके बाद ये जो दो numbers के numerator है, add the numerators together and the denominators together. What will be 2 plus 3 equal to? 2 plus 3 is equals to 5 upon 5 plus 7 is 12. Copy the last number as it is. So we have inserted one rational numbers between two numbers. But we need to add three rational numbers. तो मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करूंगा और इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर्स इंसर्ट करूंगा, तो टोटल थ्री नंबर्स हो जाएंगे. सो आई कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, जैसा प्रीवियस इसमें किया था. एड द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. सो 2 plus 5 will give me 7 and 5 plus 12 will give me 70. We'll copy 5 upon 12 as it is. अब मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करूंगा. सो 5 plus 3 is equals to 8 and 12 plus 7 will give me 90 and the last number as it is. So I have inserted three rational numbers between two rational numbers. Let's confirm this answer. Now अगर किसी ने ये सेम क्वेश्चन कोई और मेथड से किया होगा, so they might get a different answers. जैसे कि हमें पता है we can put infinite numbers of rational numbers between any two numbers, so obviously we can get infinite answers. So it's an open-ended question, which means there are multiple answers to this question.